I've been wanting to make this recipe of chole bhature that I keep talking about. It's been years. Years. Like I can't, you know, my brain has started losing words. My क्या बोल रही थी? हाँ कि basically छोले भटूरे की recipe I've been wanting to make it for as long as I can remember. Okay. बहुत साल हो गए ऐसे 10 साल तो आराम से हो रहेंगे. ठीक है. मुझे कौन सा ingredient नहीं मिल रहा था गाइस. अनारदाना. I was finding it so hard to find अनारदाना. Basically अनारदाना नहीं मिल रहा था मुझे. ठीक है. Then the other day I checked on Blinkit and it was available on Blinkit. And ऐसे मैं कभी कितनी बार भी ऐसे मंगाती थी ना तो मैं भूल ही जाती थी अनारदाना मंगाना. It's a छोटू thing to remember, you know. So yeah, so I used to forget. And then this other day मम्मा had gone हडपसरमध्ये तर मग तिथे मी मागवलं. ठीक आहे. असं माझं हृदयचे खुश झालं ना. ओ माय गॉड. आय किड यू नॉट हॅव इतना मतलब I love it, छोले भटूरे. And what they do in the restaurants is give इतना थोड़ा सा छोले का the सब्जी. The bhaturas are so huge. I'm like, what is this ratio? Like, what is this ratio even? So I was like, I want to make it at home. And then I made it at home and it's turned out beautiful. Like, beautiful. It's so good. And with that, I don't make bhatures, but I make puri. And puri also, I know very well how to make. So basically, I'll give you my secret, okay? So if you want to make puri and you want them to not be oily and not be and be very fulla basically. So what you have to do, एकदम घट्ट आटा मळायचा. ठीक आहे. काय बोलतीये मी 2-3 लँग्वेजेस मिक्स करून बोलतीये. So basically खूप घट्ट पीठ मळायचं. खूप घट्ट. म्हणजे अगदी कमी पाणी असं चुरून मग पीठ बांधायचं बेसिकली. ठीक आहे. आणि मग ते थोडं मुरू द्यायचं आणि मग लाटायचं. आणि ते लाटलं ना की ते पलटायचं नाही. ते तळताना तसंच टाकायचं. सो ते जे साईड असतं ते बराबर फ्लिप केलं की एकदम फुलतं. मस्त एकदम. व्हेरी नाईस. सो दिस इज ऑल. आणि छोले भटुरेमध्ये मी जसं पहिले बोलले की अनारदाना इज अ मस्ट. And obviously all the khada masalas that you put during the time you boil the chile bhature. And if you want to make it black, like it does look sus, okay, I'm not gonna lie, but that's how it should look. That's how they're supposed to be. So तर ते जेव्हा बॉईल होत असतात ना तेव्हा ते पहिले त्या टीच्या पाणीमध्ये हे करायचं, बॉईल करायचं. म्हणजे टी लिव्स बॉईल करवायचे आणि मग त्या पाण्यामध्ये त्याला शिजवायचं. अँड अडिशनली यू कॅन ऑल्सो पुट सम ड्राय इंडियन गुजबेरी. म्हणजे हे काय म्हणतात त्याला, आवळा. म्हणजे सुकवलेला आवळा. पण तो काळ्या कलरचा असतो. तो जशी आवळा कंठी मिळते ना तसा टाईपचा. तर ते सुद्धा टाकायचं. मग त्याचा रंग अजून थोडासा ब्लॅक होतो. आणि मग त्याला ह्याच्यामध्ये बनवायचं लोखंडाच्या कढईमध्ये. मग ते अजून ब्लॅक होतात आणि मग ते अजून टेस्टी लागतात. आणि ते ऑथेंटिक असे बनतात, यू नो. अँड आय हॅव नॉट ट्राईड वन थिंग विच इज यू शुड ॲक्च्युली थोडासा असं स्मोकी इफेक्ट सुद्धा देऊ शकतो ते कोळशाचा धूर वगैरे देऊन. ते पण काय लागेल. ओ माय गॉड. दॅट्स व्हॉट आय वॉन्टेड टू डू. आय फॉरगॉट येस्टरडे व्हेन द गेस्ट्स केम. बट माय मम्मा एक तो बापरे, शी इज अ ग्रेट होस्ट. But what she becomes during that hosting period is something I can't understand. Like she is on her toes and she's just so like this is too much. She's very, I don't know. She's not calm when she's hosting, which I hate.
and it's just so haywire, everything goes. But that's how it gets ready in time. But फिर भी ठीक है, तुझं तो खूपच असं घाई घाई करते जे मला ना I'm very आराम से I do. One sabji takes about an hour and all, but ठीक आहे, I understand it. Anyway, so तर मग त्याच्यात राहून गेलं ते माझं दूर द्यायचं. तर मला आठवलं की ती जास्त त्याची टेस्ट वाढली असती. हं, ठीक आहे. It's alright. But I'm just very happy that I can make really good chole bhature and in your face. नहीं ऐसे किसी ने मुझे बोला नहीं था कि मैं नहीं बना सकती हूँ, बट इतने साल के बाद it's great. So I'm very happy and proud of myself, girl. ऐसी बहुत सारी recipes हैं which I'm very proud of that I make. So chole bhature definitely. Second is suroi vada. I make a really 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 good suroi vada. Not to brag, but to brag. I am bragging about this. Yes. And then I make really good like ghee podi, which basically podi. I make really good podi. You should have the ghee podi idli I make. It's so good. I'm just gonna rave about it, and then probably you get hungry, and then no, I don't like having this asuri anand. Okay, आ जाना घर पे मैं खिला दूंगी. I make really good food. And also sandwiches. I make really good sandwiches and a dip which I make. I think everybody loves that dip. And also the coffee I make, which is basically my brothers love the coffee I make. Brothers, yeah, yeah, my brothers love the coffee I make. And yeah. हाँ, और क्या है वो बहुत अच्छा बनाती हूँ. Hmm. Oh, Satyanarayana wala shira. I make that really good. Like Raja's shira basically. Mast I make. Oh, damn. Hmm. और क्या है? Oh, and I also make lasan ka paratha, which is really nice. Now all the foods that I have described are not very like not very healthy. Okay, रव्याच्या शिऱ्यामध्ये खूप खूप जास्त घी असतं. लसूणच्या पराठा also that I make, it has a lot of ghee. I almost shallow fry that paratha, which is very but ठीक है. Oh, and oh my god, you have to listen to this. The amount of oil I use in a regular sabji is not even like 1 spoon, okay? It is half a spoon. Spoon मतलब नॉर्मल हमारा जो सर्विंग वाला स्पून होता है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, ठीक है, उतना उसका भी आधा मैं डालती हूँ. क्योंकि ऑयल इज समथिंग दैट आई एम वेरी लाइक आई हैव दिस थिंग दैट ओ यू कांट यूज अ लॉट ऑफ ऑयल, बट द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज द this thing chole bhature ka recipe. Usme you have to use a lot of ghee. Like I almost use half a cup of ghee, half a cup, the US measurement of the cups, half a cup of ghee. Half नहीं रे, half बहुत ज़्यादा हो गया. Half नहीं, 3/4 of 3/4. Wow. Half बोला, उसके बाद मैंने 3/4 बोला. Guys, this is nuts. Anyways, so just I'm just saying that I use a lot of ghee for chole bhature, but you have to use it because it's a rich recipe basically. So yeah, you have to use it. But it's so good, damn! It's so 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 good. It's very good. एंड ऑब्वियसली बाकी के इतने भी ऐसे अनहेल्दी नहीं है, बट उसमें ज़्यादा ऐसे रहता है ना, चीज़. आई यूज़ अ लॉट ऑफ चीज़ इन माई सैंडविचेस. देन और क्या रहता है, और हाँ, पोडी इज़ द हेल्थीएस्ट. उसमें भी आई यूज़ घी. बाप रे. ओके, Suraricha vada. Huh, yes. Suraricha vada are the healthiest, okay? Because you only grease some oil. It's all like steamed and everything. Steamed नहीं उसको वो करते हैं, मिक्स करते हैं, but हाँ, उसमें इतना नहीं यूज़ होता है तेल. So that's very nice. And it has all the great ingredients.
It has chana, it has chas, it has coconut and pomegranate seeds. Pomegranate seeds are like usme? Just wondering. Yeah, I think so. And then kothmeer and mirchi and all of that. So it's very good. That's the healthiest, okay? Hmm. बाकी ऐसे हेल्दी में ना इतना नहीं एक्चुअली मैं हेल्दी ऑल्सो आई मेक रियली गुड डिशेस आई मेक सोए का कटलेट कबाब कबाब नहीं कटलेट ही बोलते हैं कटलेट्स बनाती हूँ मैं सोया के तो वो बहुत अच्छे बनते हैं फिर उसमें भी कम ही तेल रहता है उसमें ज़्यादा तेल नहीं रहता है बट यू हैव टू हैव अ लाइकिंग फॉर सोए आई थिंक इट्स वेरी जैसे होता है ना क्या कॉफ़ी the taste you have to develop the taste it's a slow process of developing taste for soy and उसके बीच में if you had a sandwich in the middle you're like what the fuck is soy like क्यों मैं अपना चीज़ छोड़ूं ग्लूटेन छोड़ूं और ये सब छोड़ूं और फिर मैं सोय खाऊं बट ठीक है बट उसमें भी तो आई मेक रियली गुड सोय कटलेट्स बट हाँ उसका यू शुड लाइक सोय तभी अच्छे लगेंगे नहीं तो नहीं अच्छे लगेंगे एंड फिर उसके बीच में यू कैन पुट मोज़रेला ओह माय गॉड टेस्ट वेरी नाइस इफ यू पुट बीच में मोज़रेला वैसे मैं प्रोसेस चीज़ ही पसंद करती हूँ बट मोज़रेला हुआ तो पुल अच्छा आता है चाहिए एस्थेटिक तो दैट आई मेक रियली नाइस उसके अलावा ओह आई कैन ऑल्सो मेक रवा डोसा माय गॉड इट इज़ सो डैम टेस्टी if you've not had a rava dosa you have to have it you are missing out big time if you are not having rava dosas are so good बट उसमें भी ग्लूटेन होता है तो देख लो मतलब हम्म उसके अलावा फिर ओट्स का चीलाज ऑल्सो आई मेक रियली गुड दे आर ऑल्सो वेरी हेल्थी वेरी टेस्टी वेरी नाइस बट ऐसी कोई डिश नहीं है ओट्स की या ऐसे हेल्थी वाली विच इज़ लाइक वाओ विच इज़ लाइक amazing you have to be in that health space if you want to consume it like I would any day choose a rava dosa or a natural dosa or an idli over oats ka chila or soy ka kebab ya cutlet jo bhi hai so that's something and also this thing called a soy chop which apparently has maida and I really liked soy chop the other day I tried it with my friends so क्या है ये हाँ what is this behaves healthy food and I'm just talking about food for like 15 minutes oh my god yeah I can talk actually I can talk for more like I can talk for hours and hours about food तो क्या कर सकते my god my hand by the end of this fracture my left hand will be buff like it's pain it's not used to so much lifting and everything but अभी क्या ही कर सकते हैं तो मैं खाने के बारे में बात कर रही थी अभी एक रवा डोसा हो गया ठीक है और मैं क्या बनाती हूँ हाँ अभी एक रेसिपी जो मुझसे बनती नहीं है ठीक है बनती ही नहीं है विच इज़ मैगी ठीक है मैगी इज़ अ लक एक बार उसका कलर ऐसे पूरा वाइट वाइट हो जाता है नूडल्स का कलर जो होता है ना वो ऐसे सफ़ेद सा ही रह जाता है कभी कभी अच्छे से येलो होता है तो पसंद नहीं आता है यार ये क्यों ऐसा होता है क्यों एक्सक्यूज मी सो लाइक आई डोंट लाइक दैट जैसे मैगी तो अच्छे से बननी चाहिए राइट लाइक मैगी शुड बी दैट वन डिश विच यू गेट राइट एवरी टाइम बट आई नेवर गेट इट परफेक्ट एंड जब मैं परफेक्ट बनाती हूँ गेस वॉट मैंने एक ही पैकेट बनाया हुआ होता है तो देख रहे हो इतना दर्द ओ माय गॉड सो यही मुझे बोलना था कि मैगी की रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाती है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाती है
और क्या चीज़ें हैं? हाँ, तो अभी एक हैक मैंने ऐसे निकाला है कि मैगी को बनाओ तुम हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है? सब कुछ उसका हाई फ्लेम के ऊपर करो. पहिले मसाला डालो, ठीक आहे? गपचूप पहिले मसाला टाकायचा आणि मगच मॅगी टाकायची. अदरवाईज आय एम सॉरी, आय एम नॉट गonna ब्लेस युअर मॅगी. सो पहिले मसाला टाकायचा, लेट इट बॉईल रिली रिली वेल अँड देन पुट युअर मॅगी का दिस थिंग नूडल्स. नंतर नूडल्स टाकायचे. Actually, I don't have a problem with stuttering. It actually looks cute. I stutter sometimes. स्टटर बोलते हैं उसको, कुछ और शब्द है. स्टटर इज स्टटर इज वे यू मतलब जो अटकते हो बोलने में, जब आप यू जस्ट काइंड ऑफ कीप रिपीटिंग. आई डोंट. उसके अलावा अभी कुकीज़ तो है, कुकीज़ भी नहीं बना पाई हूँ, अगर मेरा आपने वीडियो देखा हुआ है इंस्टाग्राम पे. सो कुकीज़ ऑल्सो नहीं बन पाते हैं मेरे से अच्छे से. कुकीज़ तो आई कांट बाबा. इतना अच्छे से बनाया था, पता है, इतना अच्छे से, इतना अच्छा इंग्रेडिएंट्स गए थे उसमें, एंड इट जस्ट फक्ड अप. छन से जो टूटे कोई सपना. या दैट हैपेंड टू मी. दैट हैपेंड. और क्या हो गया? यही हो रहा था. और क्या ही हो रहा था अभी खाने में. अदर गुड थिंग दैट आई मेक is I don't know what's it called. It's basically called पनीर घोटाला. म्हणजे ते पावभाजीसारखं असतं, बट आता जे बटाटा असतं ना त्याच्याऐवजी पनीर वापरतात. सो इट इज सो गुड. ओ माय गॉड, इट्स व्हेरी गुड. इट्स व्हेरी व्हेरी गुड. Talking about food makes me so happy. आणि असं मी काही गोष्टी नाही बनवल्या, जसं स्वीट्स काय बनवले नाही आहेत मी एवढे. जसे वेगळेवाले आहेत ना, असं जलेबी नाही बनवली आहे, घेवर हॅव नॉट मेड. देन आय हॅव नेवर मेड गुलाबजाम. हे असं सगळं काही नाही बनवलं मी. ऑब्व्हियसली पेढे बनवले आहेत, काजू कतली बनवली आहे, असं म्हणजे बर्फी टाईप गोष्टी बनवल्या आहेत, बट नॉट लाईक गुलाबजाम अँड ओ आय हॅव मेड कलाकंद. ओ माय गॉड गाईज, I can't hair flip. What the fuck is wrong here? I can't hair flip. Okay, but I've made kalakand. Kalakand is basically milk cake, the brown version of it. Now the white version, that's like the brown version is the deal. So I've made that. Like, can you beat that? Like, hello, beat that. I would definitely say that it's very, it's very time consuming. So your face would be all red by the end of it, like completely red, because इतकं गरम गरम ते लागत असतं आणि मग मध्येच त्याला फाडायला लागतं जेव्हा घट्ट होत असतं तेव्हा. बट आय वुड डेफिनेटली से दॅट्स व्हेरी गुड. लाईक आय एम सो प्राऊड दॅट आय कॅन मेक कलाकंद. हा. एनिवेज, अजून काय अजून काय अजून काय अजून काय. पेढे इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू मेक. पेढे कोई भी बना सकता है. पेढे का इतना कुछ. I can make a really good besan ke laddu. Now beat that as well. And I would definitely say that out of everything, out of each and everything that I've ever made, or I think that I will ever make also, besan ke laddu is the most difficult thing to make, because त्याला मिक्स करता करता ना हात दुखायला लागतो. खूप हात दुखतो ते बनवताना. But the end result is amazing. It's amazing. It's very nice. म्हणजे इफ यू लाईक बेसनाचे लाडू ना, दॅट इज तसं मी तर खूप छान बनवते. बट मग समोरच्याला आवडतच नसेल तर मग माझं काय फॉल्ट. फालतूमध्ये ओव्हर एक्सप्लेन करून झालं आहे माझं. बट या, आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट रेसिपी टू मेक. व्हेरी डिफिकल्ट. Oh, and I also would want to try like mushrooms. I've heard mushrooms, like sorted mushrooms or something, it tastes nice. Not sure. Oh, also I can make Manchurian. Manchurian is also, I would say, बापरे, भयंकर unhealthy recipe. भयंकर unhealthy. It's crazy. Now, I would also say that when there's dokla, no, I love doklas, okay?
Obviously, I'm Gujarati. I love dhoklas. Hmm. So I can't make the yellow ढोकलास इंस्टेंट वाले जो होते हैं ना, मतलब इंस्टेंट वाला जो पैकेट मिलता है वो वाले मैं बना सकती हूँ और वो बहुत अच्छे बनते हैं. ओ माय गॉड, दे आर अ ड्रीम. म्हणून माझं स्वतःहून बनवलं सपोज त्याच्यात ते सगळं सोडा आणि काय काय ते टाकून सगळं बनवलं, ते नाही छान बनत, बिलकुल छान नाही बनत. तर आय वॉन्ट टू लर्न दॅट, लाईक हाऊ टू मेक इट इन्स्टंटली बट ॲट होम, लाईक विथ ऑल युअर ओन इन्ग्रेडियंट्स. म्हणजे स्वतःचाच बेकिंग सोडा आणि स्वतःचं सगळं. अँड आय हॅड टेस्टेड ऑल्सो, इज दॅट माय बेकिंग, इज माय बेकिंग सोडा गुड, इज माय और भी क्या था उसमें, विनेगर एंड एवरीथिंग, इट्स ऑल परफेक्ट. ओके, बिकॉज आई हैड बॉट इट just around that time when I wanted to make it. So it was all good only. The saga so effervescent and all, it was there. It wasn't जैसे died वाला नहीं था वो, but फिर भी नहीं बना अच्छे से, and it hurt me, like broke my heart, because I love doklas. And yeah, how many times do I have to say that? तो ते नाही आलं मला अजून. So what was something that I wanted to try? Yeah, I want to try cookies. Okay, cookies, biscuits, basic stuff that I can have with chai or like coffee or something. तर ते मला ट्राय करायचं आहे. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे ट्राय करायचं आहे. काय बोलले मी आता? I just forgot what I said. What did I just forget? काय बोलले मी आता? काय नाही येत मला बनवता? ढोकळा. सो हे बिस्किट्स आणि ते सगळं, किंवा आणि ढोकळा बनवायला शिकायचं मला. रव्याचं पण नाही येणार मला असं वाटतं आहे त्याचं, कारण त्याचं पण सेम आहे ना, नाही येणार. हे बनवता येतं छान मला, उत्तपम्स अँड ऑल खूप छान बनवता येतं. बट हे डोसा प्रकार थोडंसं अवघड आहे. अँड something that I've been meaning to try for the longest time is how to make a hando. Now I don't know how that's also going to work out, because again hando also is, I think, a very complicated recipe. I believe it can get burnt, and I have full thing that I might burn it. So hando is something I want to try. So yeah, my hair looks so bad right now. They look so frizzy, damn. Other than that, असं जास्त काय आहे नाही मला जे ट्राय करायचं. हो, आणि आम्ही मोमोजसुद्धा बनवले होते, म्हणजे मम्मीने बनवले होते बेसिकली. तिच रेसिपी ऑफ मोमोज इज सो गुड. Wow, it's very tasty. It's very, 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 very tasty. And she also makes that red chutney, which is so good. It's to die for. Oh, and you know what? I can also make mayo at home. And the pro tip is, it uses a lot of oil. If you're making a vegetarian version, it uses a lot of oil. So if you want to make it a tad bit healthier, you use a cold pressed oil. Okay. Okay, that was the tip. Because it uses a lot of oil, like half a cup of oil or 1 cup of oil, depends on how much you want to make. But basically उतना तेल लगता है बनाने के लिए, इतू सा वो मियो. ठीक है. तो and if you want to follow the recipe, you have to follow the recipe of cooking shooking, his Mio recipe, it works. And also pani puri. I make amazing pani puri. Amazing. Like, I'm not gonna brag, but it tastes almost like Radhika. And please don't come at me. Please don't come at me. I know Radhika is really good, and I am really, that's a mouthful to say that it's as good as Radhika. I'm not gonna say it's better. It's as good as Radhika. Well, this video is just me bragging about my cooking skills. And yeah. Now I tell about Mama. What Mama makes really well.
she makes the best undiyo you would ever eat in your whole lifetime. The best undiyo ever. She makes really good undiyo. Okay. Then second is vada pav and the chutney with it. Okay. And this is not that chura wala chutney. The chura wala chutney is such a scam. I don't like it. I'm sorry if you like it. I'm extremely sorry if you like it. I hate it. I like the shingdanachi chutney. Vada pav. She makes amazing vada pav. She makes really great kadhi. Kadhi matlab Gujarati style kadhi. It's not sweet, but it's white in color. It doesn't have haldi. तर ते she makes really good. आणि मग गवारीची भाजी, especially in the आम season. जो ती कैरी टाकून करते. हो 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 हो. मजा 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 मजा. क्या मजा आता है. ठीक है, बाय. ओके.